आज मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी ट्रेनर तक नहीं पहुँच सकते, किसी से सीख नहीं सकते या किसी को फीस पे नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप फ्री चैट जीपीटी का वर्जन यूज़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक टूल है जिसके ऊपर मैं बात किया करता हूँ, जिसका नाम है ऐपशीट। थोड़ा-सा ऐपशीट के ऊपर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे देखें यूज़ वॉइस मोड लिखा हुआ है। आपने इस पे क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन आपने पहले इंस्टॉल कर लेनी है अपने लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन पे और अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। Hey ChatGPT, this is Abid Maksud. Can I talk to you? Sure, Abid, we can talk. What's on your mind today? Actually, I want to learn AppSheet application development. That's great. AppSheet is a powerful tool for building applications without coding. Where would you like to start? I don't know anything about the mobile application development, so I want to start from the scratch. How to create a database? Can you please let me know first? Absolutely. Starting from scratch is a great way to learn. In AppSheet, you typically begin by setting up your data source, which can be a spreadsheet like Google Sheets or Excel. You define the structure of your data, like tables and columns, and then AppSheet automatically generates the basic app. Do you have a specific database or data source in mind? Yeah, I want to create for a hospital uh, where patients are coming and data entry operator is updating the data into system. Got it. For a hospital application, you'd start by setting up a database to capture patient information such as their name, contact details, medical history, and appointment details. You can use Google Sheets as your initial data source. Once your data structure is ready, AppSheet can help you design forms for data entry operators to update patient records easily. Would you like to know how to set up your first table in Google Sheets? Can you please let me know the column names? Certainly. For a hospital patient management system, you might consider these column names. 1. Patient ID. 2. Name, date of birth. 4. Contact number. 5. Address. Medical history. Appointment date. Doctor's name. Notes. You can adjust or add columns based on your specific needs. Does this sound good to start with? Yeah, it sounds good, but unfortunately, I cannot understand English. Can you please tell me in Urdu? जी बिल्कुल। आपके अस्पताल के लिए मरीजों के डेटा के लिए आप इन कॉलम नामों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज का नंबर, पेशेंट आईडी, 2 नाम, तारीख पैदाइश, राबता नंबर, पता, तिब्बी तारीख, मेडिकल हिस्ट्री, 7 मुलाकात की तारीख, डॉक्टर का नाम, 9 नोटिस। क्या ये आपके लिए ठीक है? जी, जी, बहुत शुक्रिया। बस मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके पास वापस आऊँगा इससे आगे चलने के लिए। जी बिल्कुल। जब भी आपको मजीद मदद की जरूरत हो, आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। आपकी थैंक यू, कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। दोबारा तो मेरे भाइयों और क्या चाहिए आप लोगों को? यहाँ पे इसने वो सब कुछ लिख के भी दे दिया है उर्दू में, इंग्लिश में। जो मैंने इससे बात की, इसने मुझे उस बात का जवाब दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प कर सकता है। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो आपको लर्निंग में हेल्प कर सकता है। इसको ज़रूर यूज़ करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि इसमें से आपने क्या गेट